We always look up to army people because that's the kind of stories we've heard. When you actually interact with them, it humbles you even more because you realize why they are greater than you. I will say that yes, their life is tough, but they don't make it look tough. लक्ष्य में जो montage में दिखाया था, वो हमारा पूरा show है, उसको ही हम लंबा कर रहे हैं बस. As a die-hard fan of the movie, right? What's the status on Go Goa Gone? The status with 2. Welcome to Radio City, Anand, Vishwajoy. How are you today? Thank you, Shweta, for having us. We are very good. Hope you're good too. I'm very well, thank you. It's a pleasure to have you both, especially when you're coming up with such inspiring show, Cadets. One similarity that I noticed between army cadets and people from the creative field like yourself is that it takes too much dedication, too much, self-motivation to tell a story that's not been told before. What inspired you to tell this story? I think we of course work in a field which requires a lot of hard work. But जब हम इनका हार्ड वर्क देखते हैं, right. जो हमारे कैडेट्स हैं जो आगे चल के हमारी मिलिट्री का पार्ट बनते हैं, हमारी देश की सेवा करते हैं, तो हमारा हार्ड वर्क उनके सामने कुछ भी नहीं रहता, यानी रत्ती भर भी नहीं रहता. एंड आई एम नॉट लाइक वी कांट इवन बिगिन एंड इमेजिन व्हाट दे गो थ्रू. तो हम अपने काम को उनसे बिल्कुल इक्वेट नहीं करते, पहली बात. दूसरा ये, हमें लगता है कि आप जब एक स्टोरी कहते हैं, जैसे आपने कहा कि जब आप एक इंस्पायरिंग स्टोरी कहते हैं ना, तब आपको ऐसा लगता है जब हम छोटे होते हैं और हम किसी की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनते हैं, तो आपके मन में, चाहे आप आर्मी ज्वाइन करें, नेवी ज्वाइन करें, एयरफोर्स करें, कोई और स्ट्रीम ऑफ मिलिट्री ज्वाइन करें या ना करें, आप अपने जीवन में अपने से खुद, आपको जो डर है, आपको जो हिचकिचाहट है, उससे आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं. अगर ये भी इंस्पिरेशन मिल जाए उस कहानी से, तो कहानी अपना काम कर जाती. और ये कैडेट्स की जब हमने लाइफ को देखा, तो जब हमने वो किताब पढ़ी, बूट्स बेल्ट्स एंड बरे, तब से अमृत और मैंने ठान लिया कि इसके ऊपर हम बिल्कुल काम करना चाहेंगे. तो थैंक्स टू अजीत अंधारे सर हु गिव अस दैट बुक टू वर्क ऑन. And we got Vishwajoy to come and help us in telling this story as a director. It's been a very humbling experience, honestly. What about you? For me, I think सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को लगता था, हमने इतनी पिक्चरें और मूवीज और शोज देखे हैं अबाउट व्हाट द सोल्जर्स डू एट द बैटल फ्रंट. हमने देखा है उनको बॉर्डर पे क्या होता है, बट हम लोग को बहुत कम वो ग्लिम्स मिलता है कि वहां तक का सफर कैसा था. तो आई थिंक वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा था कि what makes them who they are, ultimately the brave soldiers that they become. They start as young boys who are just as clueless जैसे कोई भी था जब वो 17-18 साल का है. एंड हमारे कैरेक्टर्स भी कैसे अपने अपने मोटिवेशन से वहाँ आते हैं, बट कैसे वो लोग का थिंकिंग, थॉट प्रोसेस और वो सब चीज़ें और एक मकसद और वजूद उनको मिलता है वो एक्सपीरियंस से, फ्रॉम बीइंग इन द आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी. So I think that was a very important part of this whole thing. You spoke about somebody who's a lost kid. Yes. And it just took me back instantly to my younger days. Yeah. I was a lost kid after my graduation. Yeah. One thing I knew that भाई आगे अभी और पढ़ाई नहीं हो सकती है मेरे से. So let's see what to begin the career with. Correct. Were you at your point some lost kids के यार I don't know what to do, or you had a clarity के I want to go into filmmaking? मुझे ये चाह थी. क्लैरिटी का क्या कहते हैं ना, वो ऐसा तो कुछ था नहीं. हमारे घर से कोई नहीं आता फिल्म्स में से, या हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं हमारे लिए वेट कर रही थी. तो ये चाह थी कि कर पाएं. पर हमारे जैसे इस देश में करोड़ों लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री का पार्ट होना चाहते हैं, कहानियां कहना चाहते हैं. तो वो चाह को एक सपने की तरह ही देखते थे ऑनेस्टली. तो अपने आप को लॉस्ट ही महसूस करते थे. दो वो चाह ज़्यादा से ज़्यादा शार्प होती चली एज लाइफ वेंट अलोंग. बट आई थिंक जो विश्वजॉय ने बात कही अबाउट किड्स हु आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट हु दे आर, हु आर स्टिल नॉट फॉर्म्ड एज इंडिविजुअल्स, उनका जेंटलमैन बनना, वो अगर किसी भी फील्ड में सबसे ज़्यादा ऑब्वियस चेंज आता है, वो आई थिंक एक कैडेट्स की लाइफ को देख के ही आता है. क्योंकि वो बॉयज टू मैन की जो जर्नी है ना, वो बाकी जगह थोड़ी सी मैं तो अपने आप को अभी भी बहुत ही ज़्यादा बॉय ही मानता हूँ, किडिश ही मानता हूँ. पर उनकी नज़र, जैसे विश्वजॉय ने एक और अच्छी बहुत बात कही कि उनके मोटिवेशन जब वो आते हैं कैडेट्स
जब पहली बार बनते हैं तो अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सबके मन में एक ही तरीके की भावना होती है, पर अंत में वो भावना एक हो जाती है, वो भावना सिर्फ देश के लिए होती है। करेक्ट। पर वो जर्नी देखना बड़ा जरूरी है। जो जनरली हम फिल्में जब देखते हैं ना, वो एक मोन्टाज होता है छोटा सा, जिसमें वो खत्म हो जाती है। जो मोन्टाज में आप नहीं देखते, वो हमारा शो क्रेडिट्स है। हम इनफैक्ट वही कहते थे कि लक्ष्य में जो मोन्टाज में दिखाया था वो हमारा पूरा शो है, उसको ही हम लंबा कर रहे हैं बस। Nice, nice. You know, you are working with some incredible people on the show, young men, young actors who are getting a chance to showcase their sensational talent that they have thanks to you, the story, the way it has happened. How was the experience working with them? Because when you're working with seasoned actors या थोड़े बहुत experienced actors के साथ when you're working, you know their style, the familiarity that they bring on sets and everything. With these, you had the liberty to experiment and the liberty to, you know, tell the way the story had to be told. How was it working with them? I think what they lacked in experience, they made up with enthusiasm. Correct. उनको क्योंकि वो ज़्यादा नहीं किए ये चीज़, वो हर चीज़ एक बहुत जज्बे के साथ करते थे, एंड वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी, हालांकि मैं पहले भी कर चुका हूँ काफ़ी शोज, मेरे को हर नया प्रोजेक्ट ऐसा लगता है जैसे मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो मैं उतने ही एक्साइटमेंट के साथ करता हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब सामने से भी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। एंड सो इट वाज वेरी नाइस, दे वर वेरी टैलेंटेड फर्स्टली, एंड I was initially wondering, you know, how will I communicate with actors who perhaps have not gone to acting school or haven't done a lot of projects, but because हम लोगों ने इतनी तैयारी की शूट से पहले, वो मेरे घर आते थे, हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग्स करते थे, तो वो करते करते I think they also became very comfortable with each other. That really helped, and that shows in our show, because it is at the end of the day about the camaraderie of these guys, and that they built through boot camp when they were being trained in all these things that they're expected to do as cadets. तो उनके अंदर जो, उनके बीच जो बॉन्ड था, उनका बॉन्ड मेरे साथ जो बना, उसके वजह से एटमॉस्फेयर ऑन सेट वाज वेरी कोलैबोरेटिव। वो लोग भी अपने सजेशंस देते थे, एक सेफ एनवायरनमेंट मानते थे, तो उस वजह से आई थिंक पूरा चीज बहुत अच्छे से निकला, एंड दैट्स समथिंग दैट होपफुली पीपल विल सी एंड एंजॉय टुमारो। Absolutely. As a producer, Anand, and working with a director, being a director yourself and an actor, like having these multiple feathers on your hat, how do you draw a fine line कि मुझे अभी I have to switch off the directors, you know, switch and then switch on the producers thing? So how do you do that? It's easy for me because I consider myself as a sports person. I may not play sports for anything of any value, but I consider myself a sports person in my head. So when you played a team sport, Right. You are only worried about the role that you're assigned so that your side wins. So whether you're playing football, whether you're playing cricket, for that particular match, you do that job correctly, Right. and you let the other person do their jobs correctly. So when we work, say Amrit, who's my partner, and I, अमृत हम दोनों में एक्चुअली पढ़ा लिखा डायरेक्टर है, और डायरेक्शन मैंने ज़्यादा किया है और वो प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा है ना, तो जैसे वो मुझे छूट देता है जब मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो जब मैं एज अ प्रोड्यूसर बैठा हूँ यहाँ पे, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जब हम विश्व जॉय को ऑन बोर्ड लाते हैं तो हम उन्हें अपना क्रिएटिव विजन करने दें, ना कि हम उन्हें बोले कि नहीं इसे आप ऐसे करिए, उसे वैसे करिए, क्योंकि यही सीख हमें हमारे गुरुओं ने दी है, उन्होंने हमें एम्पावर किया। मेरे भाई और मेरे पार्टनर अमृत ने मुझे एम्पावर किया जब मैंने डायरेक्ट किया, तो वही सीख मैं आगे ले गया। एंड आई फील it comes from a place of a lot of trust and a lot of joy, and those are the two most important things why we do what we do. If we didn't have that, I would have done something else. Interesting. In fact, to add to that, I would say that because perhaps that Anand himself is a director, he also understands what, when he brings on a director, Right. what they might need and what perspective they're coming from. So I think that apart from the fact that Amrit and his partnership has also taught him what a good producer looks like, I think being a good director himself, he knows what the other guy needs when he's producing. So I think that's why we've had a good collaborative. And this is the second time, in fact, yeah. we've collaborated with Vishwa Joy. Yeah. Wow. Okay, so you also, Cadets is all about, beginning of something which is going to be extremely extraordinary that we are going to see. ये जो journey है, the journey that we've seen in the trailer itself, it starts with, a little bit of fun to add to that a little seriousness as it grows, as it evolves. What
have you learned from, or have you seen an army life very closely, maybe during your travel or during something when you had an interaction with an army? What is it that resonated the most with you as a person, as a creative person, or anything it could be? I think a lot of the interaction that I had with army people was during the pre-production of this show. Right. Got to meet a lot of them, and also while we were making the show, got to meet a lot of army people and spend some time with them and all of that. And I will say that yes, their life is tough, but they don't make it look tough. You know, they have fun, they joke, they laugh, they find the joys in little things. So अगर आप उनसे मिलोगे, ऐसा नहीं लगता कि कोई एलियन से मिल रहे हैं या कुछ, उनकी लाइफ बहुत अलग है, हालांकि है, but they make it look, they wear it well, and I think that is the training that they have gotten, and that is why they look at life in a way where even the small things they take great joy in and appreciate, and that's something that I sort of took back. मेरे को लगा कि instead of cribbing about ये सही नहीं जा रहा है या वो नहीं हो रहा, अभी there are the bigger problems you can have, correct. And at least whatever said and done, at least गोलियां नहीं चल रही है जब मैं काम कर रहा हूँ, तो metaphorically चल रही होंगी, but असली में नहीं है और मेरी जान को कोई खतरा नहीं है. So I think that though it puts things into perspective, and yeah, that's what I No, thought. even जब हम लिख भी रहे थे, and the great retired, superheroes of our country that we got the chance to talk to, interact with about their cadet life. What, again, just speaking from what Vishu Joy said, that the amount of joy in the small things, and you realize that we are living such a privileged life. Correct. Where we make such a big deal about our office stuff, which is very small actually if you look at it from a perspective of what they do day in, day out. And it really opened our eyes and made us quite humble about being we always look up to army people because that's the kind of stories we've heard. When you actually interact with them, it humbles you even more because you realize why they are greater than you. True. Anand, I'm going to end, Anand, Vishu Joy. We are unfortunately going to end this because I'm loving this conversation with you. But one question before we go. When we told our viewers that we are sitting with two incredible men over here, they had just one question. Actually, a sentence and a question both, that you gave a bad news which was received very well this year. Thank God. Thank God, mine was the only bad news that was Only received bad well news this actually received very well this year. Okay, I've not seen any bad news being received so well this year. Tauba, बहुत अच्छा bad news था. Thank God. But what also people are looking forward to you is 3 years gap. Right. No acting. Oh, ऐसा है क्या? You सारे मेरे fans, please rise up, did a break the internet and tell me that I should act again. Go no, on we are to actually do we're actually looking forward to. Please tell me, as a die-hard fan of the movie, Right. what's the status on Go Goa Gone? The status with 2 is that we are really hoping that Jio commissions Cadets 2 as soon as it's out as the first part. No, listen. Because plug. I'll अरे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या plug? उसमें मैं और क्या I कर will दूँ? become a zombie and haunt you for life if you don't tell me. I what will is take the my status. chances. But seriously, on a serious note, any developments are there on Go Goa Gone too? Yaar, there is a fantastic producer called Dinesh Vijayan. You should be asking him that. There are 2 fantastic directors called Raj and DK. You should be asking them that. मैं तो उतना ही कहता रहता हूँ कि what do we know and what have we learned? I know the answer, but I'm not going to say that. But that's still my go-to movie. Thank you for such incredible work that you guys are doing. All the best for Cadets. I'm sure it's going to be a blockbuster as soon as it releases. Any one last message for all your fans? Fans, I don't know, but everybody watching this video, बहुत कम मौका हमको मिलता है अपने से बड़ा कुछ करने का. हम अपने आप को हमारी जगह पता चलती है कि सिस्टम में हम कहाँ हैं. कैडेट्स करते करते बनाते हमको ये समझ में आया कि हमसे बहुत बड़ी एक चीज़ हो रही है. तो उनकी अगर ह्यूमन स्टोरी हम कह सकते हैं तो वो कहने की हमने कोशिश की है कैडेट्स में. हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये शो देखें और हर जवान के पीछे का जो इंसान है ना, उसे उसकी ज़िंदगी को महसूस करें. Any message for you? I can't say it better than that. But genuinely, we loved making the show and we put in our hearts into it. And I think that there's a lot of heart in the show and I'm sure people will like it. So just give it a try.
How nice. This is Shweta signing off. Stay tuned for more. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।